फिल्म शाबाश मिठू भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही मिताली राज की बायोपिक है। कैसे वो डांसर से क्रिकेटर बने, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, परिवार, समाज, क्रिकेट बोर्ड, सबका क्या रवैया रहा, कैसे महिला क्रिकेट टीम को सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ी, सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। तापसी पानू के किरदार की जमकर तारीफ भी की जा रही है। शाबाश मिठू और हिट को कितने स्टार्स मिले हैं, बॉक्स ऑफिस पर कौन इस बार बाजी मार रहा है, देखिए इंडिया न्यूज पर तापसी पन्नू और मिताली राज की ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उदय प्रताप सिंह के साथ। मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मेन इन ब्लू के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा, चेयर भी काफी किया होगा, पर विमेन इन ब्लू के बारे में आप कितना जानते हैं? ये सब बदलने के लिए आ रही है फिल्म शाबाश मिठू। आई एम टॉकिंग अबाउट द मच अवेटेड बायोपिक ऑन acclaimed former Indian women's cricketer Mithali Raj. Joining us today is Mithali Raj herself, Taapsee Pannu, who of course is the lead star of the film, and director Shrijit Mukherjee. बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका, welcome. Thank you so much. Thank you. Let me start with Mithali Raj. When you knew that Shabash Mithu is going to be made on your life, were you prepared for a biopic already? क्या feelings चल रहे थे आपके दिमाग में उस? Definitely not. I think कोई ये नहीं सोचता कि कभी ना कभी उनके ऊपर बायोपिक होगा. But when Ajit, who reached out to me from Viacom, and when he told me, I was thinking maybe he's just trying to, it's a prank, could be. But it took 2-3 days for him to actually say that he's very serious. And I was definitely happy and thrilled that, because my journey as a cricketer runs parallel to the way women's cricket has evolved in our country. So I thought it would be a powerful medium, to get the story on this big screen, because it reaches us to everybody. Yeah. और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इट्स ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी डेस्टिन की जो जर्नी इस फिल्म की भी रही है, इट्स ऑल्सो बिन वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आपने और रिकॉर्ड तोड़े. I think most across 1,000 runs, if I'm not mistaken. After that, 10,000 runs. Sorry, after that exactly. First Indian women's cricketer to do so. उसके बाद आपकी अब रिटायरमेंट हुई है फिल्म की रिलीज से जस्ट पहले, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कनेक्शन है, डेस्टिनी इज प्लेइंग इट्स पार्ट? Well, my decisions when it came to the sport was always, I've always gone through the flow. Whatever has happened, just accepted it and tried to make the most out of it. And even the retirement was not something which I planned or they have planned because the movie was releasing, but something that is well thought much before. And I guess everything worked together probably. I think that is. I was just happy that everything has come together, and the movie is also releasing. Okay, और इससे पहले कि मैं उस शख्स के पास जाऊं जो अब मिथु के नाम से अब जानी जाएगी, I want to ask you, when you got to know that तापसी पन्नू आपका किरदार निभाएंगी बड़े पर्दे पे, तो पहला ख्याल क्या था तापसी के बारे में? आप कितना जानती थी उससे पहले? Were you already a fan of her work? Well, I've seen a couple of her movies which she portrayed the character of a sportswoman, and I knew that in terms of the physique, the physical fitness and everything, she already played those characters, so she will be fit. But yeah, the only thing, the question mark was, will she be able to play cricket, or will she be able to bat like the way? Because see, when you are trying to depict somebody's journey on the big screen, especially an athlete's journey, so everybody, when they watch it, they try to sort of find the similarities or how close the character looks and plays. So that was something which I was like a little skeptical about. But after the trailers, I don't think I have any more doubts. और जैसे मैंने कहा कि अब ये जानी जाएंगी मिथु, आप अब तक you were known as मिथाली, but now film is a powerful medium and you get connected with your characters, तो शायद ये होगा आपके साथ. No, I'll tell you what, I remember when Dhoni's biopic came and everyone started referring to Sushant as Dhoni. So yeah, no, people, we used to walk around and the people used to be like, yeah, Dhoni, because people have seen him do that job so well. So that will be a huge compliment from the audience if they start calling me as Mithu after the film. I think for an actor, there can't be a bigger compliment. No doubt. And
प्रिडिक्टिंग इट ऑलरेडी टुडे ऑन न्यूज़ एक्स कि ये होने वाला है तापसी। मगर मैं आपके पास आऊँगा अबाउट द डिसीजन टू डू द फिल्म। जब मेकर्स आए आपके पास और इस किरदार के बारे में आपने जाना और मिथाली राज के बारे में सब तो जानते ही हैं, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? व्हाट वर द फर्स्ट थॉट्स? See, it's an opportunity of a lifetime for any actor to do this. I knew that it's not going to happen again. Not for me, not for her, not for the Indian screen to see the first ever film on women in blue. So it will go down in history. Now, obviously I immediately said yes because they wanted a certain kind of a commitment with respect to time that I'm going to put in for the preparation. But then, it's harder when I am a very impulsive person. I think most of the times through hard, especially when I have to say yes to a film. So I did say yes to a film thinking I'll never get this chance again. I have to latch on to it. But then getting onto the pitch and trying to learn a sport which I've never played before. So yeah, there's probably not been a single day where I've not thought, why did I not play cricket in my life before? I should have at least played gully cricket. Yeah, so all those regrets of early life where you thought maybe you should have played, and why do I do this to myself of taking something something that I've not done before, so much out of my comfort zone, kept coming to me every day. But then when you want something that you've never gotten, you have to do something you've never done before. Yeah. और मिथाली से आप कब मिली पहली बार? क्या उन्होंने आके सेट्स पे आपके कुछ टेक्निक्स या शॉट्स भी देखे? No, I met her before the film shoot began, but she was an active player back then. We were shooting and I was training for the film, so she was very busy, and because of COVID, she was most of the time in bubble. और लेबर ऑफ लव रहा ये, क्योंकि आप सुना है 4 बजे 5 बजे सुबह उठती थी, ट्रेनिंग करती थी, फिर और प्रोजेक्ट्स की भी शूटिंग्स चल रही थी उस दौरान. सो इट वाजंट इजी. फिर आप इंजर्ड भी हो गई इस दौरान क्रिकेट खेलते खेलते. Yeah, there have been times. I think that with every sport it is. ना मैंने जब भी कोई स्पोर्ट खेलने की कोशिश करी है, it's good sign that you're putting it all you have, you get injured, or even athletes get injured, so that's okay. But yes, I was 4 बजे तो नहीं, हाँ 5 बजे उठती थी. I used to play between 6 to 8 in the morning, and then I used to go and shoot for my other films, which were also unfortunately physically grueling because I was shooting for Loop Lapeta at that point, and I was running. I remember I started my training in Goa. So I used to train in the morning 6 to 8 or in the evening after pack up. So either the cases, I used to run on Goa roads for like 10 hours the whole day, and then play cricket or before or after that, which was physically and then hence mentally very exhausting. But yeah, I knew what I've signed up for. So it was not like someone forced me to. So आपका कनेक्ट तो रहा है बचपन से. You've always been someone who played sport and enjoyed it. But as you said, cricket नहीं खेला बचपन में. मगर ये कनेक्ट क्या है आपका स्पोर्ट्स फिल्म्स के संग? From Surma to of course Rashmi Rocket to Sant Ki Aankh, exactly, not to forget, and now Shabaash Mithu. I don't know, yeah. I think I just probably in parallel universe I'm an athlete, I don't know. I just have this huge affinity towards sports and athletics and athletes that I think reflects when I play them on screen. And वो एक फिल्म मैं करती हूँ, वो मुझे 4 और फिल्में आ जाती हैं एथलीट बनने की. I think it's a mutual love eventually. श्रीजीत मुखर्जी, वैसे भी आपका कनेक्ट है स्पोर्ट्स के संग. अभी खैर आखिरी बार हम शेरों के बारे में बात कर रहे थे आपके संग, मगर इस बार स्पोर्ट्स की फिल्म आप लेके आए हैं. आप भी सुना है काफी पैशनेट है स्पोर्ट्स के बारे में असल जिंदगी में भी. इज दैट करेक्ट? Cricket and tennis to a certain extent, but cricket mostly. So yes, I've played cricket till the university level and done a stint as an IPL commentator on Star Sports, and read extensively on cricket. So yes, it was a kind of a natural connection, and which is why I jumped at the prospect of doing a film. I've been planning to work with Tapsee for the longest time, and planning to do a sports film for the longest time. Then when it came to me like a cricketing film, that too about Mithali, who's like a huge legend. So I obviously jumped. आप किसी और क्रिकेटर की बायोपिक बनाने की कोशिश में थे और किसी और के बायोपिक बना लिए फाइनली. एंड ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड व्हेन देयर वाज अ स्लाइट चेंज एज वेल. तो वो क्या आपके मन में कोई दुविधा थी? कोई दुविधा नहीं थी. मतलब it was a no-brainer. I mean, Tapsee playing Mithali, it was a no-brainer, and I read the script obviously, but
I mean, and I love the way her life has been portrayed. I love the way it avoids at many places from being a typical sports drama, जो inflections है up and down है. But apart from that, it was a no-brainer because cricket has always been my first love. I've always loved it even more than cinema. So Will the other sports biopics happen? that I am not sure because that the rights have been sold to another production house. Me and Viacom, we were trying for the longest time, but and I'm sure they have their own set of yeah. So I'm not sure about that, but I'm extremely happy and I feel extremely fortunate that Absolutely, it's history है. जैसे मैं कह रहा था, इतिहास है. पहली फिल्म विमेन इन ब्लू के बारे में, मैन इन ब्लू के बारे में तो हम सुनते ही हैं, मगर विमेन इन ब्लू को लेकर आ रहे हैं. blue, actually women in any color for that matter, women's cricket. So in that sense, देखिए एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़े हैं, लेकिन people remember Tenzing and Edmund Hillary for a reason because they were the first. So this is the first ever film on women's cricket, and so slice of history. Absolutely, and it's coming at a great time as well, where women's cricket is being felicitated world over. Mithali, couple of questions on your career as well. खैर अब लोग जानेंगे आपके जर्नी के बारे में फिल्म के जरिए, मगर आपके लिए कब ख्याल आया कि आप क्रिकेटर बनना चाहती है? What age was that? और कितने मुश्किल हालात थे उस समय? Well, I think cricket में डालने के लिए I think my father was very keen कि मैं cricketer बनूं. It was his decision and his choice, and I just took up the sport because out of curiosity. I was very young at 9.5, 10-year-old, और मैंने अपने brother को खेलते हुए देखा academy में, so that's how I got into the sport. Challenges तो पहला challenge तो घर में ही था, like grandparents were not very keen कि मैं sport को एक career लूँ, and वो तो होता रहता है, अगर घर में ही है तो हर रोज आपको you have to face it. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली लोगों से आया कि जब मैं उनको बोलती हूँ या फिर जब मेरे फादर उनको कहते हैं कि माय डॉटर इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट क्यों, वो लड़कियां तो कहीं दिखाने, दे डिडंट सी एनी वुमेन और गर्ल्स प्ले क्रिकेट, एंड ये स्पोर्ट में ना पैसा है, कोई पहचानते नहीं है, तो व्हाई आर यू पुटिंग योर डॉटर इनटू स्पोर्ट. तो आपके लिए आपके करियर में एक तो कौन से गेम चेंजिंग मोमेंट्स रहे हैं, एक तो कौन से गेम चेंजिंग मैचेस रहे हैं? गेम चेंजिंग मैचेस तो काफ़ी रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे आप एक मैच जीतते हो, मुश्किल फेस से आप जिताते हो मैच को, तो वो कॉन्फिडेंस जो आप नेक्स्ट मैच में ले जाते हो, सो इट पाइल्स अप. एंड गेम चेंजिंग मोमेंट काफ़ी है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहा है कि जो 214 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किया था, तब तक लोगों को ये नहीं पता था कि वुमेन्स क्रिकेट है हमारे कंट्री में. लेकिन उसके बाद जो मेरे स्टेट में जो जर्नलिस्ट ने कवर किया है, उससे थोड़ा स्टेट में दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा वुमेन क्रिकेटर है, इंडियन टीम है, शी स्कोर 200. सो फ्रॉम देयर आई थिंक वी स्लोली बिल्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. धीरे धीरे आई थिंक 2017 वर्ल्ड कप के बाद तो सभी अभी फॉलो करते हैं. और टफेस्ट मोमेंट, अगर एक मोमेंट मैं आपसे पूछूं? मुझे लगता है कि जो टफेस्ट नहीं बोलूँगी, बट इट्स अ लिटिल बिट डिसहार्टनिंग. जो 2017 में जो टीम ने किया है, 2005 में भी रनर्स अप आए हैं, बट दैट टीम डिडंट गेट द रिकग्निशन दैट दिस टीम गॉट. सो थोड़ा डिसहार्टनिंग है वहाँ पे, क्योंकि आई एम फॉर्चुनेट आई प्लेड so far, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे 2005 स्क्वाड में जिनको वो रिकग्निशन नहीं मिली है. Yeah, that's a very important point. कि don't always just celebrate at certain moments, celebrate and back the team throughout. तापसी, चलते चलते अब खैर मिथाली और शाबाश मिठू के लिए आपको बहुत अपलॉज मिलेगा, बहुत प्रेज मिलेगा, एज आई प्रेडिक्टेड अर्लियर. मगर अब जैसे आपने कहा थोड़ा ब्रेक आपको चाहिए, तो आपको ब्रेक मिल रहा है. किंग ऑफ रोमांस के संग आप फिल्म कर रही हैं, तो एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा दुनकी के बारे में, बिकॉज पीपल आई थिंक आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान, व्हाट आर योर थॉट्स? I have to go and shoot for the next schedule the moment this film releases, so it's all in your hand to make sure I go with a good mood there. Yeah, I mean remaining you'll get to know when I promote that film, na? Okay. So excited of course for it. I think that's needless to say, who wouldn't be? Yeah, no doubt. Okay, final word to you. Have you seen the film? Have you seen the entire film, and what will you say on it when you saw your life play out in front of you? I did watch the film. I think I've enjoyed it, and I've revisited some emotions, and I look forward to everybody giving a good
feedback, good review about the movie. It will greatly help in sort of not only in the promotion of the movie, the hard work that she and sir have put into it, and also people should be aware what the journey has been for women cricketers. Yeah. चलिए, थैंक यू ऑल सो मच. एज आई सेड कि इनका जरूर लेबर ऑफ लव रहा है, लेबर ऑफ पैशन रहा है, लेबर ऑफ स्वेट रहा है, और मिताली ने कितना कुछ दिया है हमारे देश को और टीम को. सो जरूर समर्थन दीजिए इस फिल्म को. एज दे से दे आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, फर्स्ट पीपल टू conquer Mount Everest hopefully through this film. Thank you all so much for joining us. Thank you so much. कैमरा पर्सन अवधेश के संग उदय प्रताप सिंह इन डेली न्यूज़ एक्स.